angles A and B. Sec A cot B minus sec A minus 2 cot B plus 2 equal to 0. Now think on this one, how to solve this example. Sec A cot B minus sec A minus 2 cot B प्लस 2 इक्वल टू 0. ये गिवन एग्जांपल है और हमें ए और बी निकालना है स्टूडेंट. सॉल्यूशन. नाउ फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने sec a कॉमन लिया. व्हाट इज रिमेनिंग? cot b minus 1 रिमेनिंग. और लास्ट टू टर्म्स में से -2 कॉमन लिया. दिस इज आल्सो cot b minus 1 इक्वल टू 0. इन दोनों टर्म्स में से ब्रैकेट कॉमन लिया, cot b minus 1. तो रिमेनिंग क्या है? sec a minus 2 equal to 0. Product of two brackets is 0. Therefore, cot b minus 1 equal to 0 or sec a minus 2 equal to 0. Cot b equal to 1 or sec a equal to 2. तो देखो स्टूडेंट्स, cot b equal to, for this one we can write cot 45 degrees or a sec a. For this 2 we can write sec 60 degree. sec 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है. Therefore, B is 45 degree and A is 60 degrees. Final answer. This book is funny. Funny, sorry. And children see the secret message of the sea. This is fun. Now you have to take your own secret message and write over here in the given space. That's it. And let's move towards the next page now. Here you will write your own secret messages. Yes, ma'am. Now, fill in odd number patterns. Next example देखते हैं स्टूडेंट्स. Now we discuss about the fundamental relation. Fundamental relations. We call it as identities. Fundamental relations or fundamental identities. फर्स्ट है sin square theta plus cos square theta equals to 1. पहली fundamental identity.
ये कैसे होता है प्रूव? देखो स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है जिसमें रेडियस 1 है. सपोज P is any point P of x comma y. We know that our OP is 1. स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की रेडियस है. OP equals to R equal to 1. Then x is cos theta, y is sin theta. Triangle OMP, right angle triangle. OM is x, PM y है. By Pythagoras theorem, x square plus y square equals to r square. R radius is 1. Therefore, we put x is cos square theta plus y is sin square theta, and radius of the standard unit circle is 1. Therefore, we get the first fundamental identity. Cos square theta plus sin square theta equals to 1. The first fundamental identity है students. Cos square theta plus sin square theta equal to 1. ये देखो स्टूडेंट्स. ओके, और एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं स्टूडेंट. फंडामेंटल आइडेंटिटीज. Consider a standard unit circle. Radius 1. P is any point on the circle having coordinates x comma y. P के coordinates x comma y. Draw PM perpendicular on x-axis. PM perpendicular drawn on x-axis. तो triangle OMP is right angled. Is right angled triangle. Triangle OMP is right angled triangle. OM x, PM y, OP 1 because radius. OM क्या है स्टूडेंट्स? x है. PM क्या है? y है. OP 1 है. रेडियस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. Therefore, by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर. बट ये जो एंगल थीटा है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन OM is equal to x is equal to cos theta. PM equal to y equal to sin theta. Therefore, equation 1 becomes OM means x square, PM is y square,
R is 1. The x means cos square theta. Y means sin theta. That is cos square theta plus sin square theta equals to 1. The fundamental identity है cos square theta plus sin square theta equal to 1. Yes. Very good. The odd numbers between 4 and 405, then 407 and 109. And then all the even numbers between 155 and 165 is 156, 158, 102, 161. Sorry, 61 is not an even number. It is a printing mistake here. 160 and So students, this is the first fundamental identity. Fundamental identity है cos square theta plus sin square theta equals to 1. Dividing both side by cos square theta. इस इक्वेशन के बोथ साइड को हम cos square theta से डिवाइड करेंगे. ये cos square theta plus cos square 1, sin square theta by cos square theta, tan square theta is 1 by cos square theta, sec square theta. We got a second fundamental identity. First fundamental identity है cos square theta plus sin square theta equal to 1. Second fundamental identity है 1 plus tan square theta equals to sec square theta. तो ये इक्वेशन 1 है. अभी डिवाइड both side of 1 by sin square theta. इक्वेशन के बोथ साइड को अगर आप sin square theta से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा cot square theta cos square upon sin square cot square theta plus sin square upon sin square 1 is equal to 1 upon sin square theta, that is cosec square theta. Therefore we got the third fundamental identity, 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. These are the three fundamental identities. Here student, पहली है sin square theta plus cos square theta equal to 1. This can be written as sin square theta equals to 1 minus cos square theta. Cos square theta equals to 1 minus sin square theta. ये फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है. sin square theta plus cos square theta equal to 1. sin square theta equal to 1 minus cos square theta and cos square theta equal to 1 minus sin square theta. सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट? वन प्लस tan square theta equals to sec square theta. One equals to sec square theta minus tan square theta. One equals to sec theta minus tan theta.
into sec theta plus tan theta. बाबा काय ते नाही देत. 1 plus tan square theta equals to sec square theta. One plus cot square theta equals to cosec square theta. 1 equals to cosec square theta minus cot square theta. 1 equal to cosec theta minus cot theta into cosec theta plus cot theta. These are the relations between the these are some relations. मुलांचं काही ते नाही देत. आपोआपच कळतं की तर आपण मग दाखव. असं नाही पण.